Yes, so the next question is, consider the following statements. The government of India provides minimum support price for Niger seeds. Niger is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. How many of the above statements are correct? So Niger seeds बहुत लोगों को शायद पता नहीं रहेगा, but this is used as one of the edible oils as well when it comes to cooking in a tribal people, especially in Madhya Pradesh. It is cultivated as a kharif crop also in most parts of India, but only exception is Odisha, where it is grown as a rabi crop. Okay, let's come to the first statement, that is MSP. So government provides minimum support price for certain crops which are very important for our consumption. तो उसमें से सीरियस के 7 क्रॉप्स है, पैडी, व्हीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज एक्सेट्रा. पल्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसमें 5 पल्सेस को ग्रो करने के लिए हम गवर्नमेंट गिव्स MSP. एंड वी ऑल्सो हैव ऑयल सीड्स. तो उसमें नाइजर इज वन ऑफ द ऑयल सीड्स, इंपॉर्टेंट. Okay, and apart from that you have raw cotton, raw jute, copra, dehusk cotton, sugarcane, जिसको FRP रहता है, जिसको हम कहते हैं fair and remunerative price instead of the MSP. Virginia flu, cured tobacco. So all these are the crops for which MSP is given, and one of them is Niger seed. So therefore all three are correct statements. Okay. So MSP क्योंकि ये UPSC का एक फेवरेट टॉपिक है, तो UPSC ने बहुत ही इंटेलिजेंटली एक और ये कि न्यूज में था कि देयर इज वन मैगजीन व्हिच वी कॉल इट एज डाउन टू अर्थ, व्हिच आई ऑलवेज रेकमेंड टू रीड. तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी ये शायद UPSC ने क्वेश्चन सेट किया रहेगा. एंड आई ऑलवेज से दैट दिस मैगजीन इज इम्पोर्टेंट. एटलीस्ट यू शुड रीड द वेबसाइट. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, ये मैगजीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. Okay, next is, consider the investments in the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. इसमें से intangible investment कौन सा है? You might have heard about tangible heritage and intangible heritage. So intangible means something which we cannot feel, right? Something which we cannot touch directly. So inventory is something which we can directly touch or we can directly feel. So इसलिए ये तो tangible हो नहीं सकता, right? बाकी brand तो obviously intangible होता ही है, उसको कोई आप touch नहीं कर सकते, right? I mean physical touch. Intellectual property is also something which is associated with your brain, right? So mailing list of clients. So these all become your intangible investment. So इन्वेंट्री जो फिजिकल होती है उसको छोड़कर बाकी तीनों भी इंटेंजिबल है. सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ओनली 3 आर करेक्ट. ये यूजुअली कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी में ये कुछ टर्म्स यूज होते हैं, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स. तो उसके लिए यूपीएससी ने पूछ लिया. बट अगर आप सादा लॉजिक भी अप्लाई करते कि टेंजिबल और इंटेंजिबल का जो डिफरेंस है, तो बेस्ड अपॉन दैट यू कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड इन्वेंट्री एंड रेस्ट 3 यू कुड हैव आंसर्ड. Right? So again, I would say moderate question, not that difficult if you would have applied your logic. Next is this question, again easy to moderate. Why? Because 15 Finance Commission always in news. उसका जो क्राइटेरिया है ये भी यूपीएससी ने 2-3 साल पहले मेंस में भी पूछा था, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो डिबेट में था उसके ऊपर. तो बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड द स्टडी ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, अगर आपका ये अच्छे से होता तो आप ये क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते. तो इसमें से कौन से 3 क्राइटेरिया है जो 15 फाइनेंस कमीशन ने हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए किए हैं, अदर देन पॉपुलेशन एंड अदर देन इनकम डिस्टेंस? सो वो डेफिनेटली उसमें फॉरेस्ट और इकोलॉजी तो आता ही है, राइट? यू ऑल्सो हैव द स्टेबल गवर्नमेंट, तो उसमें ऑब्वियसली आता नहीं, तो स्टेबल गवर्नमेंट यू हैव टू रिमूव. देन यू हैव नेक्स्ट इज टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स. और जो लास्ट इसमें से जो बचता है, दैट इज योर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. ओके, दैट इज पॉपुलेशन. सो ये सारे जो 3 है जो इसके अंदर आते हैं, राइट? बाकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स और जो स्टेबल गवर्नमेंट तो किसी के हाथ में भी नहीं रहता, तो इसलिए वो तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे. दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन आई वुड से टू आंसर. Next question
is consider the following infrastructure sectors: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. On how many of the above does UNOP's Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus for its investments? This was also, I would say, a tricky question because very rarely do we come across such initiatives in the news, right? और आता भी है तो हम इसको ignore करते हैं. But purely based on the logic of sustainable investment, तो affordable housing is definitely sustainable. एक goal भी है housing for all, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. So if you would have just applied your brain to sustainable development, then you could have easily ticked all of them. क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है, हेल्थ तो आता ही है एसडीजीज में, मास ट्रांसपोर्ट भी एक एसडीजी गोल है और अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक एसडीजी है. So based on that logic, you could have ticked or made an educated guess of all four are correct. So these are, UN एजेंडा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो उसके लिए ही ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, राइट? So that is where the S3I initiative comes into picture to make sustainable investments into various sectors. Okay, next is उसके बारे में और थोड़ा डिटेल दिया है, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का S3I इनिशिएटिव है उसके ऊपर, so you can read about that. Next is consider the following statements. Statement 1, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Statement 2, uranium enrichment or uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Which of the above following which of the following is correct in respect to the above statement? तो एनरिचमेंट अगर आपको थोड़ा बहुत उसका साइंस एंड टेक में आपने पढ़ा है, यूरेनियम एनरिचमेंट कितना रखता है, तो इट्स नॉट 60%, राइट? इट्स जस्ट 3 to 5% विच इज इसेंशियल फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट. तो इसलिए नंबर 2 तो आप डेफिनेटली इनकरेक्ट मार्क कर सकते थे, राइट? ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम कोल. तो ये तो इवन अ बेसिक ग्रेजुएट जिसको यूपीएससी को ये नॉलेज नहीं, ये भी बता सकता है कि इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो कोल से ही आता है, राइट? यूरेनियम से अब तक ज्यादा नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 को तो कोई भी करेक्ट मार्क कर सकता है. प्रॉब्लम था स्टेटमेंट 2 में. तो अगर आपको ये पता था कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम यूरेनियम, देन ऑल्सो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड. सो अगेन आई वुड से not that a difficult question, easy to answer, I would say. Next is, yes, consider the following statements. Marsupials are not naturally found in India. Statement 2, marsupials can thrive only in montane grassland with no predators. Okay, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, हर एक प्रजाति को कहीं ना कहीं कभी ना कहीं predators होते. Obviously there are some species for whom there will never be predators, like kangaroo, which is also one of the marsupials for which there is no predator in Australia. But there are other marsupials which do have predators, right? और marsupials कौन होते हैं? They have this sac, right? ये जो sac जो आपको दिखता है, these are animals and they are not naturally found in India. तो statement 1 correct हो जाता है. And these are डाइवर्स रेंज ऑफ मैमल्स जो माउंटेन में नहीं, लेकिन वो फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में रह सकते हैं, वुडलैंड श्रबलैंड्स में रह सकते हैं, राइट? सो if you want to define marsupials, so they have like this kind of a pouch, or they have a very unique morphology of their body which categorize them as the marsupials, right? सो इंडिया में ये नहीं मिलता है. सो देयरफॉर दिस साउंड, अभी कोआला भी जैसे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुआ था, तो उस टाइम ये कोआलास, कंगारूज, ये सब न्यूज में थे उस टाइम. तो मे बी यूपीएससी हैज सेट क्वेश्चन फ्रॉम दैट एंगल, राइट, आफ्टर 2 years on marsupials. Okay, next is invasive species specialist group belongs to which of the following organizations? Okay, so invasive species का ये जो एक कंसेप्ट है और जो क्लासिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करती है, दैट इज IUCN. ओके, सो IUCN इज द आंसर व्हिच हैज दिस इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप. Obviously they also have a red data list where they come up with the endangered, critically endangered, but they also come up with invasive species specialist group. Okay, that is also there.
नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फॉना. लायन टेल्ड मकाक जो वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलता है, मलाबार सिवेट, सांबार डियर. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अब रिपीटेडली आ रहे हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर फौना के स्पीशीज के ओवरऑल नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे लास्ट टाइम एलिफेंट के ऊपर था कि एलिफेंट का मैटरनल फैमिली है या पैटर्नल फैमिली है, व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड एक्सेट्रा. तो नाउ दे हैव आस्क्ड कंबाइंड क्वेश्चन. तो मलबार सिवेट और सांबार डियर ये नॉक्टर्नल है, वेराज लायन टेल्ड मकाक ये डायर्नल है, ये खास करके डे लाइट में ही ज्यादा एक्टिव रहता है, राइट. दो सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड कॉल मी एंड से कि हमने तो लॉजिक ये लगाया कि बंदर जैसे रात रात तक मत पढ़ाई कर, राइट. ऐसे कुछ कभी कोई कुछ कुछ पेरेंट्स उनको बताते, लेकिन ये कोई एक स्पेशल बंदर है. ये इट्स अ मकाक, इट्स नॉट अ बंदर ऑल्सो, इट्स अ मकाक which does belong to somewhere the family, but it is mainly active during the daytime and not nighttime. So therefore, except lion-tailed macaque, the other two are nocturnal. यानी रात के टाइम पे वो एक्टिव होते हैं, right? Okay. Next question 75 we will look into. Yes, this was also a very unique question. Now many will ask you कि सर इसका सोर्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी भयानक वगैरह सेट करते हैं. तो ये इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू और बहुत सारे साइंस मैगजीन में पिछले 2 साल में ये टॉपिक आ चुका है, बेस्ड ऑन दी कम्युनिकेशन टेक्निक्स, राइट. कि ये जो वैगल डांस है ये हनी बीज परफॉर्म करते हैं टू फॉर देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड. तो इसलिए यूपीएस ने पूछ लिया, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे हिंदू में आ चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में आई हैव रेड ये आ चुका है वैगल डांस. ओके, so sometimes the benefit of reading newspapers is you might be able to answer such questions. Okay. Next is 76. Consider the following statement. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties जो हमारे mental well-being या अलग-अलग mental disorders के लिए treat करने के लिए भी help हो सकता है. Some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. Bioluminescent means I hope you know कि जो रात के टाइम में खास करके ग्लो होते हैं, right? So all are correct. Yes, mushrooms का yes, the medicinal property है, कैंसर के लिए है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए है. देन मैजिक मशरूम जिसको हम कहते हैं, राइट, दैट कंटेन्स द ड्रग्स साइलोसाइबिन, राइट. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, साइलोसाइबिन और सिलोसिन. मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स सपोर्ट्स द सिलोसाइबिन्स एबिलिटी टू रिड्यूस डिप्रेशन सिम्टम. जो सिवियरिटी होता है डिप्रेशन का, उसमें ये एज अ डिप्रेशन क्योर यूज कर सकते हैं. Many mushroom species are substantial sources of biologically active compounds, including insecticidal activities. और कुछ मशरूम जो है वो रात को ग्लो होते हैं. नॉट ऑल बट सम मशरूम्स आर देयर, राइट. सो उनको हम बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं. और एक फंगी का है मशरूम के ऊपर, यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि इज इट अ फंगी और व्हाट, राइट. सो अभी इस बार उन्होंने मशरूम के एप्लीकेशन और उसके नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. Okay, so again, previous year's trend could have helped you answer a question on mushroom. I'm not saying it was that easy, but if you knew about mushrooms, you have studied about them based on previous year's question paper, then you could have at least definitely come up with most of the statements, right? And educated guess से आप चारों को टिक कर सकते थे. Next is 77. Consider the following statements regarding the Indian squirrels. Again, a very unique question on in environment based on the nature of squirrels. Squirrel तो हम सब देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इंडियन स्क्विरल्स के ऊपर और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है दे बिल्ड नेट्स बाय मेकिंग burrows in the ground, they store their food materials like nuts and seeds in the ground, they are omnivorous. इन मेनी आर्टिकल्स आई हैव रेड कि इंडियन स्क्विरल्स जो प्रिडोमिनेंटली है वो ट्रीज के ऊपर ही रहता है. देर आर मेनी स्क्विरल स्पीशीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर दे डू मेक बरोज इन द ग्राउंड और उनका फूड भी वो जमीन के अंदर रखते हैं. लेकिन इंडियन स्क्विरल्स के ऊपर मैंने मोटा मोटा तौर पे जितने भी आर्टिकल्स देखे उनका वही कहना है कि ये ग्राउंड के अंदर नहीं रहते और वो जमीन के अंदर वो फूड नहीं स्टोर करते. इसलिए बहुत लोगों का कहना है कि ये दोनों स्टेटमेंट खारिज किए जा सकते हैं. And definitely they are omnivorous. They don't just rely on nuts or food. They can also eat small insects.
Okay, so therefore, one only, that is 3 is correct. Again, I would raise a small question mark here. UPSC may have a different answer to this question. Let's see what UPSC has. So I will mark this as a doubtful answer, right? But whatever articles I have read, उसके basis के ऊपर ही मैं ये आपको solution दे रहा हूँ. Okay. Next is, consider the following statement. Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with the pH even below 3. So this is a biology question. जो लोग biology से है और even बहुत सारे state board CBSE में ये topic 8, 9, 10 standard के इसमें आता है, right? Even 11, 12 में भी आता है कुछ state boards में. तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो तीनों को आप सही मार्क करते थे. All three are correct. You can find microorganisms in all kinds of environment. उनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं. जैसे यहाँ पर जो थर्मल दिया है, बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होते हैं, जो पायरोबोलस एंड पायरोडिक्टियम आर्किया, ऐसे टाइप के कुछ है. उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ये कुछ नाम भी मैंने यहाँ पर आपको दिए. मे बी इट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर. जैसे जो येलो नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, वहां पर तो पीएच 2.5 to 3.5 के बीच में भी कुछ बैक्टीरियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइविंग देयर, राइट? सो दैट इज, इवन फ्रीजिंग में तो ऑब्वियसली आपको मिलते ही है, ये तो आपने पढ़ा भी रहेगा. बट इवन लो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Okay, next is, which one of the following makes a tool with a stick to scrape the insects from a hole in a tree or a log of a wood? Fishing cat, orangutan, otter, sloth bear, sloth bear. Okay. अब कंफ्यूजन फिशिंग कैट को ऑब्वियसली आप इसको बात कर सकते हो. यू कैन एलिमिनेट दैट. व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड एनीथिंग, राइट? मींस इन द सेंस कि आप वो स्टिक वगैरह ऐसे होल्ड करना. ओरंगुटन हो सकता है. स्लॉथ बेयर भी नहीं है क्योंकि वो ज्यादा करके ट्रीज पे ऊपर होता है. स्लॉथ बेयर में भी हो सकता है, बट ये जो इंटेलिजेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टिक बनाकर उसको डिग करना, ये ओरंगुटन्स है, राइट? ओरंगुटन जो नीचे जो इंडोनेशिया कंट्री में जो पाम ऑयल कल्टीवेशन की वजह से थ्रेटन्ड है स्पीशीज, तो उनके ऊपर बहुत बार आर्टिकल, बहुत बार ये न्यूज में रहता है ओरंगुटन्स. तो फाइनली यूपीएससी ने उनके नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया. सो दैट इज हाउ दे यूज दिस स्टिक्स, राइट, टू डिग द ground or dig whatever source they find wherever insects are there, right? So very intelligent primates, and always in news because of their threatened habitat because of palm oil cultivation. Next is, consider the following. एनवायरमेंट का ही एक और क्वेश्चन है. एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स. ये सिंपल क्वेश्चन था. इन हाउ मेनी ऑफ द अबव डू वी फाइंड एचएफसीज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो हम किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल के अंदर हम इसको फेज डाउन करने वाले हैं. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था. सारे के सारे के अंदर हम एचएफसीज यूज करते हैं, एंड किगाली के अंदर all countries are expected to phase it down based on their respective timelines. Okay, that also we have seen in the environment lecture. So this was a simple question, I would say. Okay, and if we are able to reduce the manufacturing of HFCs or phase out HFCs in coming years, तो 0.5 डिग्री भी अर्थ का टेम्परेचर कम हो सकता है, क्योंकि ये हाईली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस है, 10,000 15,000 टाइम्स दैट ऑफ CO2. Okay, so that's why UPSC has asked this question, जो हमेशा न्यूज में रहता है. Okay, now we come to art and culture and history. In which of the following regions was Dhanyakataka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located? तो ये आंध्र प्रदेश में है, in the present day Amravati, right, which was the capital of Satavahanas. उनका जो एरा था 1st century BCE to 3rd AD, who were the patrons of Mahayana Buddhism, right? And remnants of a large Buddhist Mahachaitya built by King Ashoka is located here in this location, right? So jo Xuanzang in his travels stayed at Dhanyakta and studied his Abhidharma Pitika. He gives a glorious description of the monasteries and the Buddhist temples here. This area was also a Vajrayana, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, ये जो 3 अलग-अलग डिविजन्स हम बुद्धिज्म में स्टडी करते हैं, तो ये यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था इसका. वेयर शाक्यमुनि बुद्धा इज सेड टू हैव गिवन द कालचक्र तंत्र टीचिंग्स. ओके, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है.
सो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए था। अगर आप बुद्धिज्म के ऊपर आपने जो सारे लोकेशंस है इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट अगर स्टडी किए, देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. सो एंशिएंट हिस्ट्री इज समथिंग व्हिच यूपीएससी इज रिपीटेडली आस्किंग नाउ. ओके, सो या इट वाज आल्सो इन न्यूज़ इन सम आर्टिकल्स, सो इसलिए ये अपलोड कर दिया. With reference to ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. This is a tricky question. It is actually not Buddhist in origin. Buddhism के भी पहले स्तूपा का एक origin था. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो स्तूपा के अलग-अलग पर्पसेस होते हैं, उसमें से वोटिव और कमेमोरेटिव ये एक स्ट्रक्चर डेफिनेटली होता है. राइट, सो विल सी इवन अर्लियर द बुद्धिज्म वी डू had we do had these stupas where the shamanas ऐसे कुछ खास करके जो मॉन्क्स होते हैं जो बहुत सारा डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क के साथ एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जाते हैं, तो उनको भी बरी किया जाता था इन अ सीटेड पोजीशन. लेकिन सीटेड पोजीशन में उनको बरी किया जाता, उसको भी हम चैत्य कहते थे. Right. So stupa is a dirt burial mound faced with stone. The Buddhism में तो और vividly इसको use किया गया stupas को, right? So it is a commemorative monument usually housing sacred relics associated with Buddha or other saintly persons, right? तो अलेक्जेंडर कमिंगम एंड उसके बाकी जो एसोसिएट्स है उन्होंने स्तूपास को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया. रेलिक स्तूपास, ऑब्जेक्ट स्तूपास, कमेमोरेटिव स्तूपास जो किसी एक इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए होता है, दैट इज बुद्धा एंड डिसाइबल्स, अनुराधा पूरा सिंबॉलिक स्तूपास. और वॉइटिव क्या होता है? These are constructed to commemorative visits or gain spiritual benefits. उसको हम कहते हैं votive, sorry not votive, votive stupas. Okay, so ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ऑब्वियसली था. इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, आई वुड से, राइट. सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डेफिनेटली नॉट दैट सिंपल टू आंसर दिस क्वेश्चन. With reference to ancient South India, Korkai, Pampur, and Muchiri were well known as what? So again, south of India is in news for a lot of times. अभी जो movies भी बहुत सारे आ रहे हैं, PS1 चोला के टाइम के movies आ रहे हैं अभी, राइट, अलग अलग मूवीज आ रहे हैं. तो साउथ के ऊपर यूपीएससी का फोकस आ रहा है. आई एम गेटिंग अ सेंस नेक्स्ट ईयर शायद नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो बी प्रिपेयर्ड. So these were all ports. Actually, Muziris port, MUZIRIS, ये एक और नाम है उसका मुचिरी. तो अगर आप में से कुछ लोगों को मुजरिस दिया रहता तो शायद आप आंसर कर सकते थे. और अगर आपने पढ़ा भी रहेगा ऑलरेडी चोला हिस्ट्री, तो भी आप इसको आराम से आंसर कर सकते थे. या आपको बाकी नाम नहीं पता है बट आपका मुचिरी अगर पता है, ये केरला में जो है, क्योंकि वहाँ इट वाज आल्सो मेजर पोर्ट ऑफ दी चेरा, चेरा चोलास पांड्या, जो तीन थे उसमें से चेरा का ये मुजिरी था, पांड्या का कोरकाई था, और चोला का ये जो आर्किमी बिडू पुमपोर एंड कोडुमनल, राइट. सो ये चोलास के पास थे. सो very important topics. UPSC has been focusing on south of India, so please start reading about their ancient history, and for next year I would also recommend northeast India, उसको भी जरूर पढ़ना. ओके, सो ये संगम पीरियड का ये है, एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाता है. तो इसलिए अगेन आई वुड से इफ योर एनसीईआरटी इज स्ट्रांग यू कुड हैव आंसर्ड दिस, राइट. Which one of the following explains the practice of Vatta Kirutal, which is mentioned in Sangam poet? तो ये एक्चुअली होता है कि कोई भी किंग अगर डिफीट हो जाता है बैटल के अंदर, तो एक रिचुअल होता है, वो सुसाइड कर देता है बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ सो एज टू प्रोटेक्ट हिज ऑनर, राइट. जो डिफीट होता है उसका प्रेस्टीज सेव करने के लिए ये एक प्रैक्टिस है, राइट. अभी ये बहुत सारे बुक्स में यूजुअली इजीली नहीं मिलता है, बट कुछ स्पेशल बुक्स होते हैं उसके अंदर ये मिल जाता है. तो अगेन आई वुड से नॉट दैट सिंपल टू आंसर कंसिडरिंग द फैक्ट कि देयर आर डाइवर्स सोर्सेज टू रीड ऑफ द तमिल हिस्ट्री और द संगम पीरियड हिस्ट्री. But if you have read them, then you could have answered that. Otherwise, you could have ignored this question. Consider the following dynasties: Hoysala, Gadavala, Kakatiya, and Yadava. How many of the above dynasties established their kingdoms in the early 8th century AD? इसमें से कोई भी early 8th century में नहीं है. इनफैक्ट उसके बाद के बहुत सारे हैं, राइट. तो अगर सी इन एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी इज आल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू नो द chronology.
So even if you would have known the chronology, you may be in a position to answer this question. But again, it's not that easy to always remember all the kingdoms in the chronological order. But at least ये जो इम्पोर्टेंट है काकतिया यादव होयसला ये सब फेमस है, तो इनको तो आपको बाय हार्ट करना ही चाहिए, इसको तो कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? तो इसमें से कोई भी 8th सेंचुरी में नहीं है। होयसाला का दिया है 10 to 14 सेंचुरी। गाहदवाला जो था वो राजपूत dynasty 11 to 12th centuries. Kakatiya was a Telugu dynasty between 12 to 14th century. Yadavas of Devagiri near the Narmada and Tungabhadra. तो ये भी उनका जो था वो 8th century के बाद ही है, right? So therefore we can say कि none of the above kingdoms were during the early 8th century AD. Next question. With reference to ancient Indian history, consider the following parts and literary work. ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, तो दिस यू शुड डेफिनेटली आंसर। देवी चंद्रगुप्ता बिल्हाना, ऑथर का नाम दिया है हमीरा महाकाव्य, नय चंद्रसूरी, मिलिंद पान्हो, नागार्जुना एंड नीति वाक्य मित्र अमृता बाय सोमदेव सूरी। मिलिंद पानो इज वेरी फेमस, राइट? तो फर्स्ट जो है विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षका, ओके? सो revolves around the maneuvers of Chanakya to win over the Rakshasa, minister of Nanda, to Chandragupta side. तो उनका एक और है देवी चंद्रगुप्ता, that centers on an incident set in the reign of Gupta king Ramagupta, right? विशाखा दत्ता का एक और ये एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है। सो उसी के बेस्ड है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, मे बी कुछ बुक्स में नहीं होता, बट एटलीस्ट जो सेकंड दिया है नया चंद्र सूरी रोट हमीरा महाकाव्य, which is among the latest important works of Sanskrit literature, that is correctly matched. Milinda Panho, okay, so it is Nagasena and not Nagarjuna, okay, so इसलिए ये भी आप ये तो बहुत फेमस है, आप इसको इजीली एलिमिनेट, सो इट इज नॉट करेक्टली, आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन बाकी ऑब्वियसली थोड़े से ट्रिकी थे। सोमदेवा फॉलोइंग अप द ट्रेडिशंस ऑफ अर्थशास्त्र, राइट? तो उसमें से 4 उपायास है इन इज नीति वाक्य मित्र, तो दिस इज करेक्टली मैच। सो 2 and 4 वर करेक्टली मैच, राइट? तो इसके अंदर क्या है कि the author has also attached importance to acquisition of land, according to him is the better than that of money, which is better than acquiring the land. He has also referred to the importance of king's 3 powers after Kautilya, such as the intellect, the material, and the volitional. Okay, so that is something I would say a tricky question, not that easy to answer considering जो अभी elimination आप नहीं कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक शार्प मेमोरी चाहिए टू रिमेंबर ऑल द लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर्स, ओके? Next is souls are not the only property of animal and plant life, but also of rocks, running water, many other natural objects not looked on as living by other religious sects. Okay, तो डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन से आप इजीली इसको जैनिज्म लिख सकते हो। आपने देखा है कि जैन मॉन्क्स जो बिना चप्पल के मुंह को एक कवरिंग बांध कर वो चलते हैं, बिकॉज दे बिलीव की सोल्स हर एक एस्पेक्ट में होते हैं, right? So therefore that needs to be protected and that needs to be respected. Okay, this was a relatively simple one, I would say. Jainism का ये philosophy है. So yes, that was simple one. 88. Which among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? तो इसका आंसर है देवराया वन, राइट? सो Krishnadevaraya I in 1410 he had built a barrage across the Tungabhadra river, a 24 kilometer long aqueduct है from the river to the capital, right? So UPSC has been asking questions about the architectural, I would say, achievements or brilliance of various dynasties. उसमें से ये एक डेफिनेटली एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है उस टाइम का, इतने in the 15th century to build such a large barrage, architectural novel in itself, and an important one for the population, for irrigation as well as the drinking water, right? So ये एक है।
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर, यूजुअली ये जो साउथ के डिनेस्टीज है उसके ऊपर टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर यूपीएससी ने अब तक क्वेश्चन पूछे। अभी उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीकल्चरल अदर जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, तो प्रिपेयर एवरी डिनेस्टी स्पेशली द इम्पोर्टेंट वंस फ्रॉम अ होलिस्टिक एंगल। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव to Portuguese? So the answer is Bahadur Shah. Okay. So early in the 16th century, the Sultan of Gujarat, Bahadur Shah, came under immense pressure when his kingdom was invaded by the second Mughal emperor Humayun. At that juncture, he decided to remain on conciliatory terms with the Portuguese, और जो ट्रीटी ऑफ बैसिन, राइट, जो साइन की सीडिंग ड्यू टू द पोर्टुगीज। ये अगर आपको ट्रीटी सारे याद है तो शायद आप इसको आंसर कर सकते थे, राइट, ट्रीटी ऑफ बैसिन। तो अगेन आई वुड नॉट से कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये सारा हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते ही टेक्स्ट बुक के अंदर। So if your memory was sharp, you could have recalled that. Okay, right. So next is, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ये भी सिंपल था, ये हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1883, राइट। तो सर जो बंगाल के लिए लिमिटेड था उसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट कर दिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। So yes, next is, some part of solution I have missed out to paste here, so I'll paste that later on, don't worry, इसमें कुछ incomplete रह गया, I'll add that. In a sense, what does the due process of law mean? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसमें भी कुछ लोगों का डिबेटेबल सोल्यूशन है। कुछ लोगों का कहना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस में क्या है कि किसी नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज एंड जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली बीन सीन, राइट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके अंदर फ्री फ्रॉम बायस, इट शुड बी प्योर एंड इम्पार्शियल जस्टिस। ओके, सो यस, डेफिनेटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, बट उसका मीनिंग as far as I can deduce from the various articles and textbook is fair application of law, right? It does have an element of principle of natural justice, but uska I would rather bet my answer more on fair application law, क्योंकि इसी लॉ को हम यूज करके एक important निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, which is free from any bias or prejudice. So therefore I would say, based on the various articles and textbooks we have on Indian polity and the concept of due process, fair application of law should be the most probable answer. Some have also given principle of natural justice, but again as I said कि ये principle को use किया जाता है during the due process of law, but उसका meaning आता है fair application of law. Okay, let's see what UPSC has to give here. Next is 92. Statement 1. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day-to-day administration of the prisons. Yes, definitely. ये तो simple था थोड़ा. Statement 2 क्या है? In India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. ये थोड़ा tricky था, but since statement 2 is right, और यही source से हमने state governments को ये अधिकार दिया है, provincial government, state governments. तो इसलिए both are true, and statement 2 is also the correct explanation of statement 1. Okay, this, if you knew statement 2, only then you could have answered this properly. Otherwise statement 1 को सिर्फ easily mark करके आपको आंसर पूरा नहीं मिलता था इसमें. Okay, next is 93. Which of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? It's definitely C, क्योंकि ये it defines and limits the powers of गवर्नमेंट। ये एनसीईआरटी में भी दिया है आपके, राइट। इसमें से अलग अलग फंक्शन है, उसमें से एक मेजर फंक्शन है टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस, राइट। सो दिस वाज द सिंपल, इट वाज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर पॉलिटी, जो एनसीईआरटी में भी दिया है, तो expected to answer these questions. Okay, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental right? This is again a bit of debatable question. My answer again I would go to केशवानंद भारती के बाद जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, केशवानंद भारती हैज बीन इन न्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि 50 साल हो गए उस जजमेंट को,
तो और उस जजमेंट के कुछ फैसेट्स को ओवरटर्न करने के लिए इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हमारा अधिकार है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर जो केशवानंद भारती में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यस डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज राइट टू amend the or change the fundamental right, but subject to the basic structure doctrine, right? तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये केशवानंद भारती में आया था और उस बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बाईपास करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। लेकिन देयर इज वन मोर डिबेट, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का भी बेयरिंग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर था, जो नेहरू जी के टाइम में आया था। वह फर्स्ट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट फॉर मल्टीपल रीजंस। उसमें से एक है कि जो जमींदारी है उनका उनके जो अधिकार है उनको गवर्नमेंट के पास लाना। सेकेंडली, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके लिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया था, so that they could implement that caste based reservation. Then somewhere that first amendment which Nehruji had brought also had a bearing on our right to equality. Right, the court had ruled that this was a violation of right to equality, as stated in Article 15. Right, जो caste-based reservation in state-funded education. ओके, जो फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, चंपाकरण दोराईजान केस, वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट ऑर्डर दैट प्रोवाइडेड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एनैक्ट किया फर्स्ट अमेंडमेंट को, that nothing in the article in clause 2 of the article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of socially and educationally backward citizens of India। तो इसका भी बेरिंग होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। So let's see what UPSC gives this answer। ये भी थोड़ा debatable answer है इसका। As far as I am concerned, because केशवानंद भारती is in news, so और उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेरिंग था, तो 42nd अमेंडमेंट ही इसका आंसर होना चाहिए। बट लेट्स सी इफ यूपीएससी हैज दिस आल्सो इन माइंड, और क्या ये इस क्वेश्चन को स्क्रैप भी करते हैं, क्योंकि डिबेटेबल आंसर हो सकता है। तो आई विल रेज अ क्वेश्चन मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, yes, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। yes, next we will go to is yes, consider the following organization or bodies in India। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है? दिस वाज सिंपल, राइट। इफ यू न्यू रिसेंटली कि रामनाथ कोविंद के टाइम में भी एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक एस्टैब्लिश किया गया था ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के लिए और ऑल दिस। सो ए इज डेफिनेटली द आंसर। बाकी सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। तो इसमें भी एक अमेंडमेंट लाया गया था, 102 अमेंडमेंट अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो टू मेक the NCBC a constitutional body under Article 338B of the Indian Constitution, right? So ये भी न्यूज में था 4 साल पहले। तो this is basic polity, so therefore I expect you should have answered this question। Okay, so I would say bit of easy to moderate, not that difficult to answer। 96, consider the following statements। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of the President before the date of decision becomes invalid। Absolutely not। ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है, बहुत सारे बुक्स में भी दिया है कि जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट ने लिए है वो वैलिड रहते हैं, राइट। इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इट, इफ द इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट के, जो सारे एक्ट्स किए हैं वो वैलिड रहते हैं। दे डू नॉट गेट एक्सपंज्ड और दे डू नॉट गेट they do not get invalidated। Okay? So election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। No, अगर यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ये बार नहीं होता, इलेक्शन रुक नहीं जाता उससे, राइट। तो इफ यू लुक एट द प्रीवियस सोल्यूशन विच आई हैव एडेड, जहाँ पर एमएलए के वोट के ऊपर क्वेश्चन था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में, वहां पर भी लिखा था और लक्ष्मीकांत में भी लिखा है, रीड केयरफुली, कि अगर कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ है और वहां पर कोई मैंडेट नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आगे बढ़ता है, राइट। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits
within which he or she has to declare his assent. Absolutely not. इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट का जो पॉकेट है वो काफी बड़ा रहता है, एंड मीन्स अगर पॉकेट कर दिया मीन्स he or she just uses the veto to not even give assent or even deny the assent, right? So तीनों की तीनों wrong है, तो इसलिए none of the statements are correct. Okay. So yes, yeah, the president has the power to return the bill for reconsideration, withhold the assent, or give the assent based on the discretion. तो उनको कोई time limit नहीं दिया गया है. Okay, next, with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements. When Lok Sabha transmits finance bill, see, money bill is a finance bill, but finance bill के finance bill 1 and finance bill 2 अलग-अलग types होते हैं. When Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject it. Yes, ये correct है. When Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, but it can only make recommendation. Obviously, money bill is what where we present our budget. तो money bill तो exclusive domain है लोक सभा का, तो वहां पर राज्यसभा उसको amend नहीं कर सकता, reject भी नहीं कर सकता, तो ये भी सही है. In the case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. Yes, finance bill के लिए joint sitting होता है, money bill के लिए नहीं होता है. तो तीनों के तीनों straightforward options थे, and all three are correct. All these three you can read from Lakshmikant, right? तीनों के तीनों सही है. It was again, I would say, simple. Consider the following statements. Once the central government notifies an area as a community reserve, ये तो मैंने मेरे एनवायरमेंट के लेक्चर में कितने बार बोला है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर, क्योंकि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. अभी क्या बचा है? एक होता है कम्युनिटी रिजर्व और एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व, राइट? तो इसमें क्या है? द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन of the state becomes the governing authority of such forest. Yes, hunting is not allowed in such area. So obviously ये भी करेक्ट है. हंटिंग अलाउ किया तो फिर इट विल बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन हो जाएगा. पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. यस, दे आर. तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट है. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को परमिशन नहीं है. व्हाई? बिकॉज यू माइट हैव हर्ड ऑफ झूम कल्टीवेशन. सो झूम कल्टीवेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दैट इज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक इन not just in northeast but other parts of India as well, where the slash and burn technique is used, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है. तो except for all the three are correct. So community reserves क्या है? These are areas, right? Protected areas which typically act as a buffer zone or connecting zone or migration corridors between national park, wildlife sanctuaries and reserved and protected areas. Okay, उसका ही एक और होता है कंजर्वेशन रिजर्व. ओके, जो प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स किसी के होते हैं, तो अगर वो एक इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी जोन है तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. The largest administrative unit forming the scheduled area in the district and the lowest is the cluster of villages is the block. The chief ministers of the concerned states are required to submit their annual reports to the Union Home Ministry on the administration of the scheduled area. Absolutely not. तो ये किसका काम है? गवर्नर का काम होता है, राइट? तो इसलिए ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. बाकी दोनों सही है. एज पर आर्टिकल 244, fifth scheduled areas are areas that president may declare by such order with the consultation with the governor of the state. Second be corrected. District is the largest administrative unit which forms the scheduled area, while the lowest is the block in the village. तीसरा मैंने जैसे बताया कि गवर्नर का काम होता है ये रिपोर्ट सबमिट करना एंड नॉट द चीफ मिनिस्टर. Last question. Again, I would say this was simple to a bit moderate, not that difficult to answer. Last, finally, yes. Consider the following statements. Supreme Court of India has held in some major judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Yes, that is correct. ये Supreme Court की judgment में आ चुका है. But स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 335 है उसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है ये कुछ दिया नहीं, क्योंकि ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, राइट? तो इसलिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है 335 के अंदर. तो ये बहुत सारे जजमेंट में बताया गया है कि जहां पर रिजर्वेशन का 50% का ब्रीच हो रहा है तो वहां पर एफिशिएंसी भी दिखना चाहिए कि अफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, राइट? उसको ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पॉलिसीज को रखना चाहिए.
बट व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी, ये कहीं भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है. So one is correct, but two is incorrect. This also you could have easily answered if you knew about the basics of how the reservation policy works. So finally, we have come to an end of one of the most unique prelims paper. जिसको देखकर बहुत लोगों के होश भी उड़ चुके रहेंगे. But after this discussion, I am sure कि ये आपका जो आने वाला प्रिपरेशन है डेफिनेटली ईज आउट हो चुका रहेगा. यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कहाँ से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए क्वेश्चंस को, राइट, हाउ टू एलिमिनेट इवन विथ सच ट्रिकी ऑप्शंस एंड कम टू अ डिडक्शन, राइट. एंड एज आई सेड कि 100 के 100 क्वेश्चंस आना कंपलसरी नहीं है. आप 100 में से लेट्स से अगर 80 भी सॉल्व करते हो और आपका 60 भी राइट आ जाते हैं, 55 to 60, तो भी आप सेफ स्कोर में आ जाते हो, right? So the challenge is to get up to a sufficient, a well-respected score, which will get you into mains. And this paper, in spite of the fact कि ये moderate to difficult level पे था, I would say with a good solid preparation, a good analysis of previous year's paper and application of knowledge. अगर ये आपने स्मार्ट स्टडी along with हार्ड स्टडी किया रहता तो आपको कट ऑफ में आने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती, राइट. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेनी क्वेश्चंस वो रैंडम, कहाँ से पूछे गए हैं, क्या पूछे गए ये पता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अभी भी सॉल्यूशंस डिबेटेबल है. स्टिल you know, as I said in the beginning of this session, कि in spite of the fact that this paper was tricky, 10 to 12,000, 13,000 people will still write the mains, right, and they will be going to the next stage. तो इसलिए don't go after a lot of furor which has been created कि इतना tough prelims है, कैसा होगा, क्या होगा. No, you still have a lot of scope to answer questions rightly, provided you have studied hard and studied smartly and have a good hold of previous year's question. Or newspaper reading. UPSC is expecting you to read newspapers. आप रेडीमेड कंपाइलेशंस, रेडीमेड इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स को अगर बस यूज करोगे और न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे न्यूज़पेपर से डायरेक्टली सेट होते हो, आप आंसर नहीं कर सकते हो. माय सिंसियर सजेशन इज दैट यस, दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी मटेरियल प्रोवाइड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, नो डाउट, बट प्लीज डोंट मेक दैट एज योर core source or the only source for current affairs. Right? Please start reading newspapers. खास करके इंडियन एक्सप्रेस में जो अभी यूपीएससी का स्पेशल सेक्शन उनके वेबसाइट के ऊपर क्रिएट किया गया है, आप उसको देखिए, उनके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए. यूपीएससी एमसीक्यूज आर देयर ऑन करंट अफेयर्स के इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट के ऊपर. दैट विल डेफिनेटली एड योर प्रिपरेशन फॉर सच काइंड ऑफ डायनामिक क्वेश्चंस. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि यूपीएससी इज आस्किंग क्रॉस सेक्शनल MC statements in one single question. तो आपका दो टॉपिक्स को लिंक करने का भी एक आदत आपको डेवलप करना है, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना है, राइट. इसलिए मेंस ओरिएंटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन विल हेल्प यू आउट हियर. ओके, सो कट ऑफ आई वुड से जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आई वुड से प्रिपेयर करो. अगर आप 75 या बाउंड्री लाइन के ऊपर भी है तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो. डोंट वेस्ट योर टाइम इन डे ड्रीमिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट. टाइम वेस्टेड इज यू नो वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो टाइम फिर से नहीं आता है. आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज ड्यूरिंग माय अटेम्प्ट्स. आई यूज्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस डिस्कशन. देन आई रियलाइज कि ये फालतू का ब्लड प्रेशर और दिमाग खराब करने का ये होता है. बट फिर भी बहुत लोगों को एक इच्छा रहती है कि सर कट ऑफ बता दो. तो कोई भी दुनिया का इंसान कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट एक एवरेज जनरल कैटेगरी के लिए आई वुड से 80 प्लस आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, राइट. 75 भी है तो भी आप प्रिपेयर करो. बाकी कैटेगरीज का जैसे ये पिछले साल का है, आप थोड़ा सा उसमें से प्लस तो नहीं कहूँगा बट एटलीस्ट -3 to 4 मार्क्स करो. दैट शुड बी योर अप्रोक्सीमेट कट ऑफ. अगेन एज आई सेड कि दिस इज नॉट अ एक्यूरेट फिगर. द रीजन आई एम सेइंग कि कट ऑफ कम आएगा क्योंकि एक तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है और डिफिकल्टी लेवल GS-1 का भी ज्यादा है. इवन CSAT मेनी पीपल हैव वंस अगेन मेस्ड अप बिग टाइम, राइट. तो 66 मार्क्स को मिलाने के लिए भी यूपीएससी आपको काफी मेहनत करने के लिए लगा रहा है. बट उसका प्रॉब्लम एक ही आ रहा है कि पीपल आर टेकिंग CSAT स्टिल लाइटली. वो प्रीवियस 4 to 5 years के पेपर अभी भी ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे. लास्ट मोमेंट पे इसको आप रख देते हो तो आपको 66 भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है उस केस के अंदर, राइट. तो माय सिंसियर सजेशन इज कि अभी से ही CSAT को साइड बाय साइड करना स्टार्ट करो.
and don't take it lightly and don't keep it for the last moment. Okay. For those who feel that they can clear the prelims based on this solution discussion, syllabus का हर एक word GS1, GS2, GS3, GS4 का अभी उसके ऊपर 10 से 15 पॉइंट बनाओ. On my Telegram channel, I have pinned वसंत दाबोलकर जो इस साल का टॉपर है, one of the UPSC toppers, उसका मैंने टेलीग्राम का लिंक किया है. हाउ ही हैज वंडरफुली प्रिपेयर्ड माइक्रो नोट्स, ब्रीफ नोट्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन. इसके लिए मैं भी वीडियो एक सेपरेटली लाऊंगा. आई विल ऑल्सो बी मेंटोरिंग ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड. सी दोस्तों, ये वीडियो को बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मुझे कोई कोर्स बेचना है. आई एम नॉट हियर टू सेल एनी काइंड ऑफ कोर्सेस हियर, unlike other institutions or academies. I want to be your friend and I want to ease your UPSC preparation so that you get in tune with the changing nature of UPSC, right? So if you find my mentorship is useful, you can join that for mains come other mentorship. Otherwise, it's fine. You can always contact me for any other basic doubts or any other exam related doubts you have. I'm always happy to help. इसलिए मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी लिखा है, गरीबों का दोस्त, जिनको अफोर्ड नहीं होता है उनके लिए मैंने ये मेंटरशिप और ये चैनल स्टार्ट किया. Okay? So if you are still doubtful, still start preparing for मेंस. 20-25 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा. उसके साथ साथ आपका EPFO होगा, RRB होगा, MPSC, UPPCS वगैरह अलग अलग जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम लाइंड अप है वो आप दीजिए. और अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है और आपको गारंटी है कि शायद आप अभी क्लियर नहीं कर पाओगे इस साल का प्रीलिम्स, तो आप आपका कोई भी प्लान भी रेडी रखो, साइड बाय साइड कोई जॉब ले लो और साइमल्टेनियसली यूपीएससी को प्रिपेयर करो. दोज हु आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट, so I hope this analysis of prelims would have helped you to now understand how UPSC is setting questions from which sources and what is the trend of the questions which are being asked. Okay. So I would just say that जिनको ये पेपर देखने के बाद थोड़ा सा ट्रॉमा आया होगा या whatever it is, it's just because you haven't understood what UPSC is expecting. And I would still say that don't quit. Right? And this is my favorite poem. When things go wrong, as they sometimes will, in the road you are trudging seems all uphill. When the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but please don't you quit. Life is queer with a twist and turn, as every one of us sometime learns, and many a failure turns about when he might have won if he had stuck out. इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होते वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज दे स्टक आउट. They did not give up upon the pace, even though they found it slow चल रहा है, right? 2 साल लग रहे, 3 साल लग रहे, but they did it, right? So I'll soon try to have a session with Vasant also, cleared in his third year of preparation, right? And we will also see how he managed these struggles and he came out successfully with flying colors. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. बहुत लोग मैं यूपीएससी को हमेशा कहता हूँ सांप सीढ़ी का गेम है, राइट? जैसे वसंत का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. वसंत वेंट अप टू इंटरव्यू लास्ट टाइम, दैट इज 99 स्टेज, 100 यहाँ पर है सक्सेस. इंटरव्यू देने के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, एंड ही अगेन हैड टू गिव प्रीलिम्स, राइट? इट्स अ स्नेक एंड लैडर गेम. He had to start again from prelims, and yet again he cleared for mains, and this time he came out with flying colors, right? अगर उसने गिव अप कर दिया था कि अरे मैं तो इंटरव्यू तक गया और इंटरव्यू तक जाने के बावजूद भी मेरा नहीं हुआ, तो क्या ही होगा? बट he believed that he was close to the golden crown, and therefore he stuck out his neck. He believed in himself and came back once again and got into top 100 and now IAS officer, right? So that is the belief. Success is failure turned inside out, the silver tint of clouds of doubt, and you will never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are the hardest hit. It is when things seem worst that you mustn't quit. So please keep this poem in mind whenever you feel low. आप इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखो एंड फाइट हार्ड, राइट? दुनिया का कोई भी सिचुएशन हो, यूपीएससी नहीं, दुनिया का कोई भी सिचुएशन हो, आप एक ट्रबल्ड सिचुएशन से जा रहे हो लाइफ के अंदर, तो please never give up. There is always hope at the end of the darkness, right? And there is always a sunlight or daytime after the dark night. Okay. So with this, I would say
I wish you all the best for your next prelims preparation if you're preparing for the next attempt, or for those who are going to prepare for the upcoming mains examination. This is my contact number. This is my Telegram channel. Feel free to contact me. Yes, those who are interested can also contact me for personal mentorship or essay writing and answer writing for GS subjects. Okay. Thank you. All the best. Don't give up and keep rocking.